In other news, BJP's candidate in New Delhi constituency Parvesh Verma has spoken on the upcoming Delhi elections. Verma says that he will meet every voter as per the new voter list, which contains 1.9 lakh votes. Adding to it, Verma says that he has only one agenda, and that is the agenda of development. BJP candidate from New Delhi constituency is doing a recce of his constituency and meeting with people, on which he says that he is asking people to list down all the work that has been done by Arvind Kejriwal in the past 11 years, and he claims that citizens have been unable to say a word, adding that Arvind Kejriwal will lose his deposit from the constituency this time. Let's quickly listen in to Parvesh Verma. केवल एक ही लक्ष्य है कि यहाँ के सारे मतदाताओं से मिलना, उन सबसे बात करना, उनकी समस्या को सुनना और अपना मैनिफेस्टो बनाकर वो सारी समस्याओं को ख़त्म करना। तो यहाँ पे अभी जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें 1,09,000 वोट हैं। तो एक एक मतदाताओं से मिलना है। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ पे झुग्गी बस्ती हैं, यहाँ पे पोस्ट कॉलोनी है, अलग अलग वर्ग के अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। तो सभी से मिलना है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, पार्टी का एजेंडा है, उसको ज़मीन तक लेके जाना है। अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसको भी लेकर जाना है जनता के बीच में। देखिए अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने 1645 ऐसे जो झुग्गी बस्ती के लोग थे उनको मकान की चाबी दी। मेरे पिताजी भी हमारे दिल्ली के सीएम रहे, कभी उन्होंने एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी। कल मैं देख रहा था संजय सिंह जी कोई ऐसा लिस्ट बता रहे थे, यहाँ झुग्गी तोड़ी, यहाँ झुग्गी तोड़ी, मगर वो सारी वो झुग्गियाँ हैं जिनको मकान की चाबी दे दी गई है। जो वो मकान की चाबी, जैसे अशोक विहार में मकान की चाबी दी है 1645 लोगों को, तो वो जो जिस जगह पे नरक की ज़िंदगी जी रहे थे तो उनको चाबी देने के बाद में हटाया गया। उनकी झुग्गियाँ जो हटाई वो पहले उनको मकान की चाबी दी अशोक विहार में, उसके बाद हटाया। तो वो ऐसी ऐसी झुग्गियों का नाम ले रहे हैं, तो अपना मानसिक जो उनका संतुलन है। My colleague Anand Singh with us on the broadcast. Anand, how exactly is the battle for New Delhi now shaping out? Yeah, Devika, look, since the New Delhi Assembly constituency from where former Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal is contesting, and now as BJP candidate, former Chief Minister Sahib Singh Verma's son Parvesh Verma, who is a former two-time MP from the National Capital. And he mentioned while taking a dig at the Kejriwal, he said that yesterday only the voter list has come out for the New Delhi Assembly seat, and there are around 1.9 lakh voters in this constituency, and he has been going and holding door-to-door campaign in the assembly seat over there. And he also mentioned that yesterday only he went to BK Dutt colony where he met over several women over there, and he asked them that if they can recall any of the 11 works that the Aam Aadmi Party government has done for them. So they were unable to recall any of the single work that has been done by Kejriwal. So clearly, he took a pot shot at Kejriwal, and he mentioned that how the Aam government has failed in the national capital in the last 11 years. And similarly, he also took a swipe at the Congress, saying that the Congress is fighting for its existence in the Delhi, as Sandeep Dixit, the son of former three-time Chief Minister Sheila Dixit, is also in play from the same New Delhi Assembly seat in the national capital. Back to you, Devi. Anand, stay on with us. Meanwhile, Congress